Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I will teach you computer science of grade 5, and today's our topic is computer software. Page number 30. First of all, let me tell you about computer software. Computer software, as we know, is basically the set of instruction group that make the computer to function in the desired way. It can be classified in categories: pre-written software packages and custom-made specification group. Well, students, computer software, also called software, is a set of instruction and its documentation that tell a computer what to do or how to perform a task. Software includes all different software programs on a computer, such as application and the operating system. वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पे हदायत का एक ग्रुप है जो कंप्यूटर को मतलूबा तरीक़ों से काम करने के लिए तैयार करता है और इसको टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. Well, first of all, let me tell you about pre-written software. Computer pre-written software may be classified into three broad categories. First one is application software, second one is system software, and the last one is utility software. So, application software is the set of programs necessary to carry out operations for a specific application. For example, programs to solve a set of equation, process examination result, etc. make up application software. Well, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम इक्वेशंस का सेट सॉल्व कर सकते हैं और इम्तिहानात के नताइज पर प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑन द other hand are general programs written for the system that provides easier way for the writing of application software. Pre-written software packages typically address the processing needs of user. Okay, now we are going to discuss briefly application software. An application is the job a user wants the computer to perform. An application package, or simply an application, is a set of programs that allow the computer to perform specific data processing job for the user. Application software help the user to work more faster, efficiently, and more productively. A user-friendly package is a package that is easy to learn and use. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर के यूज़र के लिए एक मखसूस डाटा को प्रोसेस करने के लिए मदद देता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को ज़्यादा तेज़ और मौसर तरीके से ज़्यादा कारआमद अंदाज में काम करने में मदद करता है. And application on packages may perform. First one is single function application package, and second one is integrated function application package. First of all, let me tell you about single function application package. Well, single function application packages can be divided into special purpose packages and general purpose packages. Special purpose packages are those packages designed for a specific type of users. For example, for doctors, a doctor can enter a patient details and the result of his test in computer. A medical package can carry medical history of patient. And the next one is general purpose packages. Packages are packages that can be used for a number of different tasks.
For processing package, Microsoft Word, Data Manager, Graphics and Electronic Communication. We'll move to next, integrated function application package. Combine several and general purpose function in a single product. They includes most of following functions. First one is processing words, second one is manipulating spreadsheet, and third one is managing database of files, and the last one is preparing graphics. वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड पैकेज के बारे में, पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक के लिए बना दिए गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक मखसूस काम करते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है वो सारी पब्लिक के लिए बना दिए गए हैं, दुनिया में कोई भी आदमी उसको यूज़ कर रहा है, ये होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड है, उसका काम क्या है? वहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना के उनको सेव करते हैं, लेकिन इसी में हम MS वर्ड में हम अपने फ्रेंड्स से चैट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो फीचर ही नहीं है। इसमें इस सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक फीचर्स में बना दिया गया है। सो इस सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक काम के लिए बना दिया गया है और जनरल पब्लिक इसको यूज़ कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर, एंड पैकेज सॉफ्टवेयर enable the people to perform daily activities, and package software normally developed by expert programmers. MS Word, MS Excel are examples of package software. Well, student, I am sure you have understood today's topic, and hopefully there will be no confusion. And one more important thing, I have a home task for you. You will solve these questions on your notebook. Question number 1 is, what are different types of pre-written software? And question number 2 is, what are different types of application software? And the last one is, what is an operating system? Well, students, you will get all the answers of these questions from this lecture. Well, that's the end of my lecture. I hope you enjoyed. Thank you. Allah Hafiz.